solving another problem, and this is on DSA. So it's pretty basic. This problem is pretty basic. करना क्या है? Well, we have been provided with the BST. What is BST? It's a binary search tree. अब जिन लोगों को ट्री नहीं पता है वो लोग रिवाइज करके आ जाओ, और अगर पता है so it's well and good. It's pretty easy problem. करना क्या है वो समझाता हूँ. So we'll be given with the value which we need to add in this BST. अब BST की एक स्पेशलिटी होती है, पहले समझाता हूँ. So our BST looks like it's like a tree, और इसमें जो टॉप मोस्ट जो वैल्यू होगी यहाँ पे इट्स लाइक ये रूट पे, इसके एक तरफ यहाँ होगा, दो नोड्स होंगे दोनों में, and this would be the right one, this would be the left one, of course इनके भी दो होंगे, and every root has two nodes to it, like every node has two nodes to that particular node. So it's like it looks like this, and the speciality of BST is let's suppose अगर यहाँ पे हमने 4 रखा है, so the value inside this should be less than 4. It can be and 2 or something, and the value in this in the right circle, it should be more than the its root, more than its root. So on this it should be 3, or yeah, it can be 3, it has to be 3. Let's suppose either if it's 1, then यहाँ पे 2 या 3 दोनों में से कुछ भी हो सकता था, and then this can be null or anything it can be, but it should be less than 1. And then same as here, like same here also, this should be more than 4, and similarly this should be more than this value, and this value should be less than this but more than this. So you get the concept, right? अब हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू दी होगी, उस BST में ऐड करनी है. ये अपना BST प्रोवाइडेड था 4 2 3 7 1 ऐसे करके. नाउ 4 2 7 1 3, नाउ इसमें हमें वैल्यू 5 ऐड करनी थी. सो नाउ द थिंग इज we have to traverse through the tree. अब वो कैसे करेंगे? BST की जो स्पेशलिटी है ये वाली, इनकी वैल्यूज का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट, उसकी हेल्प से. सो व्हाट विल डू इज कोड पे चलते हैं. सो यहाँ पे जो अपनी वैल्यू है, इट्स जस्ट अ इंटीजर. सो these four lines are just there to make not this one, these 3 lines are there to make this value a structure node. इसलिए हम लोग इसको नोड में ले रहे हैं ताकि हम ऐड कर पाए लास्ट में. ओके, सो व्हाट विल डू इज हम लोग ये वाला डिफाइन, वैसे इट्स लाइक इट्स नॉट रियली रिक्वायर्ड, बट एट द एंड यू नीड टू रिटर्न द रूट. सो इसलिए हम लोग अलग से एक बना रहे हैं ताकि स्टार्टिंग से पूरा का पूरा ट्री रिटर्न हो सके. टेम्प बस ट्रेवल्स करने के लिए यूज होगा. इट्स अ टेम्परेरी नोड टाइप का. So what we'll do is, okay, we'll do this. Why is this required if you guys don't understand this? So it's pretty simple. Let's suppose temp जो तुम्हारा है वो empty है. So in that case it's like null, and null का not would be true. So it will like simply return the value v. V is what? V is our node, value वाला node. उसको हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया है उस वैल्यू के साथ होगा, तो वो रिटर्न हो जाएगा. दैट्स इट. लेट्स सपोज अगर तुम्हारा जो रूट है वो एम्प्टी है, तो हम लोग सिंपली उस स्ट्रक्चर को रिटर्न कर देंगे जो इस वैल्यू को कंटेन करता है, ये वाला यानी कि v. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो हम लोग ये वाली कंडीशन हो गई अगर जो तुम्हारा टेम्प है वो एम्प्टी है. सो विल मूव फॉरवर्ड. लेट्स सपोज टेम्प एम्प्टी नहीं है और एंड इट्स लाइक समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ है. तो कैसे करेंगे? और हमको वैल्यू दी हुई है 5, तो वी हैव टू ऐड द वैल्यू 5 टू दिस पर्टिकुलर ट्री. अब करना कैसे है वो है. तो सबसे पहले हम लोग नॉट टेम्प पे जाएंगे, वाइल टेम्प. इससे क्या होगा, इससे जब तक टेम्प की वैल्यू नल नहीं होती तब तक ये लूप करता रहेगा. सो इफ कंडीशन टेम्प ऑफ वैल्यू इज लेस देन वैल्यू. why are we doing this? So let's suppose जो अभी initially the temp would be pointing to this 4. So the value of 4 is less than val. Val here is 5. So is this true? Yeah, it's true. So it will check this condition. Why are we
giving this condition. Let's leave this for now. Okay, we'll do this. Temp is equal to temp of right, so it will go into 7. Now it's pointing to 7. Now okay, so it will come again. It won't go to else, of course, so it will come again. Now temp is not null, so it will again do a loop. It will check the value, is it less than, so that's not true, so it will come to the else part. Now see, the if condition we are adding inside it, nested if, is because let's suppose you have something here and you have some values here also, and you want to add a value somewhere, like you want to add here, but previously जो हमको रूट मिला था उसमें तो यहाँ पे null था. So what we are doing is we are checking if that particular value was null previously. So if it was null, तो उस केस में what we'll do is, let's suppose यहाँ पे ये null है right वाला part. So what we'll do is, instead of we'll remove the null and हम लोग उसकी जगह पे v लगा देंगे जो कि हमारा value वाला node था, and उसको break कर देंगे. That's it. Same for the left one side. So let's suppose left side empty है तुम्हारी, means null है उसकी value, so it will become true. It will put the value of v, structure v, the node v, it will be added on the left of temp and empty exit कर देगा loop को. That's it. And then उसको हम लोग root को return कर देंगे जिसमें हम लोग पूरा का पूरा वो कर रहे थे काम, तुम्हारा जितना भी traversing तो हमने temp का यूज किया. अब वैल्यू ऐड करने के बाद हम लोग रूट को रिटर्न कर देंगे जिसमें वैल्यू स्टोर्ड हो गई होगी. अब सिंपल. And that's how you solve these kind of problems. And to be honest, like, okay, this was a pretty basic question trees का. Trees के question generally इसी टाइप के होते हैं, but let's suppose you are not able to understand the language, like this time we are using the C language, cause DSA मैंने C में किया है, so it's pretty basic for me. But if you are not able to understand, just एक बार tree और linked list को समझो, उनका concept समझो, and binary इनमें traverse कैसे होता है trees में वो समझो बस. That's it. Pretty basic है, कर लोगे खुद ही.